ये जो एक आइडिया लोगों के दिमाग में है ना कि भगवान कहीं पता नहीं कहाँ रहता है और उसको हमने प्रार्थना सुनानी है और उसको हमने अपने दुखड़े रो रो करके सुनाने हैं। और घरों में बच्चों को ऐसे ही तो सिखाते हैं, बेटा मंदिर में मत्था टेको। बच्चा कहता क्यों, ऐसे सिर झुकाने से क्या हो जाएगा? बेटे तू पास हो जाएगा। हद हो गई, सिर झुकाने से बच्चा पास कैसे हो जाएगा? हम उसको नालायक बना रहे हैं ये बात कह के। हम उसको भक्ति नहीं सिखा रहे, हम उसको नालायक बना रहे हैं ये बोल के मत्था टेक पास हो जाएगा। वो सोचता है ये तो बढ़िया काम है, साल भर खेलो मस्ती करो, एग्जाम के टाइम पे भगवान के आगे मत्था टेक दो, पास हो जाएंगे। एक बच्चा मंदिर में गया और दोनों हाथ जोड़ करके मूर्ति के सामने कुछ बोल रहा था बड़ी देर से। पंडित जी बड़े हैरान हुए कि बच्चे तो इतनी देर रुकते नहीं हैं और ये पता नहीं क्या बोल रहा है। तो पास जा करके खड़े हुए तो बच्चा कह रहा था, भगवान भगवान 2+2 को 6 बना दो, 2+2 को भगवान 6 बना दो, 2+ प्लीज प्लीज भगवान 2+2 को 6 बना दो। पंडित जी ने उसके पीठ पे हाथ फेरा, बेटा क्या बोल रहे हो, 2 और 2 4 होते हैं, 6 नहीं होते हैं। कहते जी मैं एग्जाम में 2 और 2 6 लिखाया हूं, तो भगवान जी को मैं कह रहा हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, 2 और 2 को 6 बना दो। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे के भोलेपन पर प्यार आएगा, पर जिस माँ या बाप ने उसको ये बात सिखाई है वो कितने बड़े बेवकूफ थे कि अपनी कोई भी कमी कमजोरी होए तो भगवान को बोलो, भगवान ठीक कर देंगे। बच्चे को बुखार हो जाए, प्रार्थना करो, भगवान जी ठीक कर देंगे। थोड़े दिनों में बच्चा भी अक्लमंद हो जाता है कि डैडी ने गोली खिलाई तो बुखार उतरा था, भगवान ने बीच में क्या किया? इम्तिहान में मैंने मेहनत करी, मैं पास हो गया था, इसमें भगवान ने क्या किया? तो धीरे धीरे हम अपने ही बच्चे को नास्तिकता की ओर धकेल देते और उसको ये लगता है कर तो मैं रहा हूं, खामखा भगवान का नाम हो रहा है, किया तो मैंने है, भगवान ने क्या किया? ये जिस तरीके से तुम अपने बच्चों को भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मेरे पास बहुत बार स्कूल के कॉलेज के बच्चे आते हैं, Guru, please bless us. Why? What for? My exams are coming. I said, so then why do you need my blessings? Oh no, I want to pass. I said, for that you need to work hard. You don't need me. No, 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 my mom said that if you bless, then I will pass. I said, she is a liar. She is not telling the truth. What is the truth? The truth is this: you should work hard, yeah, and prepare your exam properly. And then you will pass, right? Right. He is getting it. Your mom also says that, do pranam, you will be passed. No? Good. She's intelligent mom then. Then somebody will say, why pray to God if I'll work hard and I'll pass? Then what is the need to pray then? What is role of God? Number one, role of God is this, that this stupid brain which you have is a gift of God to you. Number one. You already have been given the intelligence, use it. Intelligence is God's grace. 3, if you can understand this and work hard, you are definitely blessed. वो दूर बैठा भगवान कहां से, भगवान कृपा भेजो, भगवान कृपा भेजो, कहां से भेजे? कुरियर से भेजे। अमेज़न में हम ऑर्डर करें, send us 10 kg of grace, God. And to whom do we pay? And to whom do we say?
But usually the mandirs and the gurdwara, they have donation boxes. No, that is the company-owned teller machine. So people are putting $10 in that, and God, send me grace. $10, God, do something for me. So that is the payment booth. You know, you shop in the mall and then they have this desk where you go and you pay. And then you take the stuff and go out. भगवान कहीं दूर नहीं बैठा है जिसको हम ये कहें कि कृपा भेजो भेजो भेजो, और वो पता नहीं कहां से भेजेगा, और कृपा की क्या शक्ल होगी। कृपा मतलब क्या होता है? लोगों के लिए वो पास हो जाए, उनका टेंडर हो जाए, उनका पीआर हो जाए, उनको गाड़ी मिल जाए, उनको मकान मिल जाए, वो कहते कृपा हो गई। तो जिनके पास मकान नहीं है या नौकरी नहीं है या शादी नहीं हुई, उनके ऊपर मेहरबानी नहीं हुई क्या? उनके ऊपर कोई कृपा नहीं है। कृपा इसको कहोगे तुम? कृपा का मापदंड ये है कि तुमको माल कितना मिलेगा। ऐसी प्रार्थना करने वाले लोग नहीं समझते कि परमात्मा क्या है और कौन है। और मूर्खों की तरह जो लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि भगवान कहीं दूर रहते हैं और जब हम अच्छे कर्म करके मरेंगे तब हम वहाँ भगवान के घर में जाएंगे। भाई तुम्हारे पास एड्रेस है कि गूगल करोगे वहाँ भी? कैसे पहुँचोगे उसके घर? कैसे जाओगे? जो परमात्मा को तुमसे दूर दिखाए वो तुम्हें सच नहीं बोल रहा। जो परमात्मा को कुछ रिश्वत दे करके कृपा को चाहे ये सिखा रहा है तो वो भी तुमको धर्म नहीं सिखा रहा। So I am trying to make you understand this, that your very existence is the evidence that God exists. And your body is functioning and mind is functioning, and just one thing which is coming in context I like to say. Somebody once asked me that all those children who are born challenged with the stunted brain growth, or they are born with some congenital diseases, is God making a mistake in making those diseased, sick children? The truth is no. If the parent, the would-be, the man and the woman are sick, and if they will mate, they cannot produce a healthy child. Please take some responsibility on yourself also. Don't put everything on poor God. God can't even defend. He doesn't have any lawyers. He or she, the God, doesn't have any lawyer. How will God defend himself? Don't put all the blames. Somebody said, why the floods are happening? Please read some science to know it, why floods are happening. The stupid human beings have done so much of deforestation. They have interfered into the nature's cycle. That's why you are having floods, or too much hot, or too much cold, or too much snow. Don't blame it on Mother Nature. And they always write, Mother Nature's fury. Newspaper headings will come. The Mother Nature is taking revenge. Mother Nature is not a politician who will take a revenge. And who said nature is your mother? They have created these, taglines, and they'll just talk nonsense, and then people will repeat that nonsense, and then everybody will believe that nonsense. In Ayurveda, we say that if somebody wishes to become a parent, then they should first visit a Vaidya who will do a diagnosis of the pulse of the man and woman, and let the
Vaidya decide if you are totally healthy or not. If the mother, the man or woman, either of them, if they are unhealthy, the chances are going to be, you never know. आप अपने बगीचे में खराब सड़े हुए बीजों से खेती नहीं करते हो, आप अच्छे सीड्स लाते हो, अच्छी कंपनी के सीड लाते हो, या अपने सीड खुद बना करके रखते हो, और सीड खराब हो जाए तो आपको भी मालूम है कि उससे अब कोई पौधा नहीं निकलेगा। तो जिस मनुष्य के बीज से आगे बच्चा पैदा होना है, जिस माँ के, स्त्री के अंडे से आगे बच्चा पैदा होना है, क्या वो ओवा ठीक है? क्या वो पुरुष का वीर्य ठीक है, स्वस्थ है? देखना ये चाहिए, वो तो कोई देखता नहीं। फिर जब कोई बीमार बच्चा पैदा हो जाता है तो भगवान को गाली फ्री में पड़ जाती कि सारी गलती भगवान की। तो हमारी इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर को जो आधार दे रहा है, वह आधार देने वाला ही परमात्मा है। तो परमात्मा दूर हुआ कि पास? कितने पास? 2 सेंटीमीटर पास? कितने पास? 1 मिलीमीटर पास? कितने पास? I have this question. The person has not written the name. The question is, I and many spiritual seekers. Now this person is a spokesperson of many, many seekers. Now definitely this person will not come up and say, this is me. May I know who is this person? Okay, thank you. I would like to know, what is this thing called enlightenment? Is it for real? Can it be achieved? If yes, how to achieve it? As I have already said, body, senses, mind, intellect, consciousness, and the self. Now in the self there are 2 self. One which you recognize as who you are now. But then one which is minus this body, mind, intellect, even consciousness. This real self. When somebody recognizes this real self, this is called enlightenment. Now you exist. Nobody has doubt whether I exist or not. Do you have any doubt? Do you exist or not? Nobody would say, I don't exist. Even if you say, I don't exist, then who is existing, who is saying this, that I don't exist? Hence you do exist. But am I just a body, a mortal frame? Am I mind? Am I intellect? Am I emotions? Am I memories? Who am I? When you begin this research and begin to understand and open up these layers and go to the source of self to know, and when you know, this is called getting enlightened. Light on a dark area will let you see what is lying there. So what is lying beneath this mind and intellect? With the light of wisdom, with the light of pure knowledge, with the light of Atma knowledge, Atma Gyan, you get to see what your real self is. And when you know this, you tear this curtain of darkness and ignorance, and this removal of darkness and bringing on this light is called enlightenment. Right? It is a procedure. It is the involution. It is something
like what you already have, but you don't know what it is. So it's a very intriguing research. But unfortunately, people are so busy in making money and making babies and making houses and doing all what not. But nobody is realizing that a very big objective, and the most important objective, was to know who I am. And not knowing that, whatever you have done will give you a very temporary satisfaction. मुझे याद आता है स्वामी शिवानंद जी के जीवन के बारे में ऐसा कहते हैं, प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे और बर्मा में वो सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। और वहाँ पर हॉस्पिटल में वो मरीजों को देखते हैं और फिर जब मरीज मर जाते थे, सब दवा सब इलाज किया और मरीज मर जाता था, तो वो सोचते थे कि हमारी दवाओं से हम उसको बचा नहीं पाए, हम ऑपरेशन किया हम उसको बचा नहीं पाए, तो ये जीवन है क्या और ये जीवन आया कहाँ से और इस जीवन का कंट्रोलर कौन है? कौन तय करेगा कि ये मर जाएगा और ये जिंदा रहेगा? वो कर्म है, वो भगवान है, वो भाग्य है, वो प्रारब्ध है, वो क्या है? और अगर कोई अनदेखी शक्ति इस शरीर को चला रही है तो वो शक्ति क्या है? ऐसे कितने सवाल उनके मन में पीड़ा बन करके उनको तकलीफ दे रहे थे। और फिर एक दिन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और ढूंढने गुरु को ऋषिकेश पहुंच गए।